Hello students, I welcome you all in my physics lecture. Today we will start a topic that is electric potential, and it's a second part of this topic. Part 1 is already I have uploaded. Okay, let's start our lecture. Yes, so our first topic is electric potential due to group of charges. There are so many charges as you see Q1, Q2, Q3, Q4 and Qn, that is the Qn. That means there are n charges and we have to find the potential at point P due to this charge distribution, right? So if we calculate one by one due to Q1 at point P, that what is the potential? Then you have to find the potential at point P due to Q2. That means if we have to find the potential at point P due to all these charges, you have to apply the superposition principle, as we have already done this topic, superposition principle, in our first chapter, right? So what is superposition principle? Basically, superposition principle tells us that when we add to same quantity many times, then we use the superposition principle. So if you find potential due to one charge at point P and there are more charges similar to Q1, then you have to just summation over it so that you will get the potential at point P. Now let's see how to derive this. Yes, electric potential at a point P due to charge Q1 is V1 is a potential at point P due to charge Q1. That means KQ by R, that we already derived the formula of potential in our first lecture. So that is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 divided by R1, right? So I name it as equation 1. Now the V2 is the electric potential at point P, but this is due to second charge. Please remember the radius and charge will differ. This potential is due to charge Q2 and the distance will also vary. As you see in the diagram, the R1 is the distance between point P where we have to find the potential, and Q1 is a charge due to which we have to find the potential. That means the distance between Q1 and P point is R1. Q2 and the distance between point P is R2. That means as we move from one charge to another charge, the distance will also vary. So that's why I have changed here Q2 divided by R2. Similarly, if we have to find the potential due to charge, that is V3, that means potential V3, that is 1 by 4 pi epsilon naught Q3 divided by R3. So now we have to find the potential up to n charges, right? So when we add these all charges, that means potential due to these all n charges at point P, then how we will find? That is, we have to summation over it, V1 plus V2 plus V3 up to Vn. The potential due to first charge is KQ by Q1 divided by R1. Similarly, due to second charge, KQ2 divided by R2, and so on. So common thing is K, right? So K is 1 by 4 pi epsilon naught. I have taken common from all these brackets. Now you have left with Q1 divided by R1, Q2 divided by R3 and Q3 divided by R3 and up to n. Now you will see this 1, 2, 3, that means variation starts from 1 and goes up to n. That means if we take a summation, we take a summation over this subscription of charge and R. Now summation means हम sum कर रहे हैं इन सब charges का. That means from where to where? From 1 to n. So I take a summation from 1 to n Qi divided by Ri, and this will be common, right? So this is the potential expression for due to group of charges if you have to find the potential end point due to group of charges, right? So please remember it. Okay, let's move to our second derivation, that is electric potential at any point due to electric dipole. As you all know, in the chapter of electric field we have discussed the electric dipole very. Yes, right. Now A and B. See, so A is at minus Q, that means first charge of dipole is minus Q and plus Q. The distance between them is A, right? So if you have to separate this, okay,
that means this is a minus q and plus q. So dipole is separated by a distance of 2a, as you know. So at point A, if the total distance is 2a, then it's a and a, right? So a and a, that is 2a distance. Now you have to find the potential at point P due to this dipole. That means due to this point, if you have to find the potential, plus due to this point, then you will get the expression, right? But how you will find? Now you will see this P point is not an axial point, that means not along the dipole and not at the equatorial point exactly. So that means you doesn't have the exact formula as in case of electric field. Now you will see, first we have to find the electric potential at point P due to this charge. Then what is the formula of electric potential? Due to minus q charge क्या होगा? kq by r, but here q is minus q, so I have replaced the charge q by minus q and divide by r1. That is the why I take r1, because the distance between point P at this point and this A, that is the r1, right? Similarly, you have to find the potential due to this charge at point P, that is k positive q divided by r2. Why r2? Because the distance between point P at this point and this is the r2, right? So now you have to add these both charge potentials. Okay, yes, v is equal to v1 plus v2, k is common, minus q by r1 plus q by r2. kq, this will become the minus, so I will take it as second term, minus r1 divided by r2. Now you have to find the expression value of r2 and r1. So I will substitute the value of r2 and r1, but first you will see how we find r2 from the figure and r1 from the figure, right? Now you will see this whole thing is r1, right? So this is r1. If I put it in the form of, see, this AP is, if you will see from the diagram, AP will resemble with PC. This one, this point is C, right? So if this point is C, then AP is resembled by C, right? So this R1, if we write in the term of R, first of all you will see I will drop a perpendicular from B point at this point. So this I will name at point D, right? Similarly, I will drop a perpendicular at point C on extended the OP line. So this will meet at point C, right? So these are two perpendiculars. Now if this is A and the angle made by the dipole theta between this line, so in this triangle if you find OD, then what is OD? OD is A cos theta, because cos theta is based upon hypotenuse, that means base is A and hypotenuse is cos theta, that means base divided by hypotenuse, right? So now you will see if this is perpendicular, right? If this is perpendicular, you have to find what? Base, and this will act as hypotenuse. OB is hypotenuse in this case. So that you will find AB perpendicular by base by hypotenuse. Now so base will becomes A cos theta, that means A cos theta. Similarly in this is angle theta, this is perpendicular, right? Base perpendicular, and this one is hypotenuse. So similarly this one is also A cos theta, right? Now you will see if I write R1 in terms of R and A cos theta, how you will write? AP is similar to, you can write CP. There is minute difference, right? So you can resemble it. So R1 we write in the form of total this distance is R up to this point R plus A cos theta. That means R1 को हम क्या लिख सकते हैं? R, this R plus this A cos theta. That means R1 we write in the term of R plus A cos theta, right? So R1 is R plus A cos. Similarly R2, how you will write? Yes, this one is R2, right? This distance is R2. So this distance we resemble like this only. Full distance is R. This R2 is nearly equal to OP, this distance. That means R2 को हम क्या लिख सकते हैं? Total distance R minus this A cos theta, because this PD distance is resemble to BP. There is minute difference, because in first case हमने कुछ extra
थिंग लिया था, यहाँ पे R1 छोटी थी इस पूरे से, राइट, तो हमने एग्जाम्पल कर लिया. इन दिस R2 हम थोड़ा सा छोटा ले रहे हैं क्योंकि प्रॉपर R2 हमें नहीं मिल रहा. सो R2BP is nearly equal to PD. That means total distance is R minus this A cos theta. Then you will get R minus A cos theta, right? Because this OP can't be equal to PB because this one act as a long side, right? So if you shift towards here, this BP line, this will become perpendicular. So how perpendicular becomes equal to hypotenuse? So that's why this resemble only PD, right? Okay, now I will just substitute the value of R2 and R1 and solve the expression for the potential due to the dipole. Okay, as you see, R1 is R plus A cos theta, R2 is equal to R minus A cos theta. I just put the value of in above expression Q divided by 4 pi epsilon naught. R2 की जगह R minus A cos theta and R1 की जगह R plus A cos theta. Now just take the LCM. R minus A cos theta, A minus B, A plus B. So A square minus B whole square. Just take the LCM. R will cancel each other. You will left with 2A cos theta divided by R square minus A square cos square theta, right? So 2A into Q give us the expression for dipole moment. So that means QA into 2A, that is the expression for the dipole moment. QA into 2, that 2A, that means P, and P cos theta divided by 4 pi epsilon naught R square minus A square cos square theta. So this will become P. That means we get the expression for the potential, that is P cos theta divided by 4 pi epsilon naught R square minus A square cos square theta. As you see from diagram, R is very greater than the A. You will see here this distance is R and this is much larger than this A distance. So I ignored the A square cos square theta as comparison to R. Now you will see I have neglected this term, right? So you will left with P cos theta divided by 4 pi epsilon naught R square. Now we will discuss the cases if this P point is on equatorial point or on the axis. Now if P point is on the axis, that means theta is either 0 or either 180 degrees, sorry, right? So on the axial point, P cos theta divided by R square. On axis point theta is either 0 or 180 क्योंकि उसी लाइन के लॉन्ग लेंगे P पॉइंट, तो या तो इधर होगा या फिर इधर. दैट मीन्स अगर लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं तो 180 बन जाएगा एंगल, अगर राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं तो एंगल 0 डिग्री. सो थीटा इज 0 डिग्री, cos 0 is 1, दैट मीन्स P अपॉन 4 pi epsilon naught R square. अगर 180 तो माइनस. So I just have put the value of theta. You will get the expression minus kp r square for theta 180 and for theta 0, that is kp by r square. So at axial point expression is plus minus kp divided by r square, right? If you find out for the equatorial point exactly 90 degree, cos 90 is 0, so you will get the 0 potential at equatorial point, right? Okay, as we have done the derivation for electric potential due to a dipole, right, and due to single charge as we have done in first lecture. So now if you compare the potential value for the single charge and potential value due to dipole, what you will conclude? The electric potential due to dipole, you will see from the expression, जैसे आपने पहले किया पॉइंट चार्जेस के लिए हमने किया था कि वो KQ by R होता, that means सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. But in case of electric dipole, you will get the expression R in terms of R square, here R square, right? Similarly here R square. So that means in the form of electric potential for point charge, that is 1 by R, and for electric dipole, that is 1 by R square. Now the next thing is, in case of point charge, potential will depend on only on radial distance, that means RKQ by R. But in case of electric dipole, P will also come, right? So it depends on dipole moment also, right? Okay, so these are some basic things. Next is conservative nature of electric field, that is derivation. कंजर्वेटिव नेचर का मतलब क्या होता है? जो वर्क डन डिपेंड ना करे कि हम किसी भी, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, राइट, तो आप कौन सा पाथ फॉलो करो वो मैटर नहीं करता उस चीज के लिए. आपको बस अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंचना है इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करके, राइट. सो कंजर्वेटिव का मतलब कि हमें फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ पे एंड अप कर रहे हैं. द वर्क डन टोटल क्या होने वाला है? 0. आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, चाहे ए से बी जाओ क्लोज पाथ के लिए और वापस आओ बी टू ए, टोटल वर्क डन 0 होने वाला है, राइट. दैट विल टेल अस द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, now you will see work done
in moving a test charge along a closed path in the electric field. Okay, so I will take this closed path. That means if we move from A to B, we follow the first path, and when we come back from B to A, that we follow the second path. So you have to find that work done to move from A to B and again back to A point. That means closed path पे कितना वर्क डन करना पड़ता है, तो हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करती है. नाउ यू विल सी वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कितना होगा. एज वी ड्राइव इन फर्स्ट लेक्चर, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, Q that is equal to minus A to B E D dot dl. Basically what is this? This is a force or work done, energy, that is force into distance, because work done क्या होता है, force into distance, and QA हमें force बताता है and this is distance. So F की जगह मैंने QE पुट किया और Q को इस साइड पे ले आए. तो अगर आपको ये समझ ना आ रहा हो तो आप फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं. WAB डिवाइड बाई Q नॉट माइनस इंडिकेशन फ्रॉम A to B, क्योंकि हम इनिशियल पाथ A है and final is B point. So you move from A point to B point. E dot dl. I will express this as first equation, right? Now the second is when along the second path. I will just decode this definition. WAB हम क्या होता है, potential क्या होता है, work done upon charge. So I just final position minus potential at minus VA. That is the initial position potential, that is final position potential, right? So you can write this if you want, otherwise you can skip this expression. You just have to see this. This is the first expression when work done from path A to B. That means we आप move कर रहे हो first path के along, right? Now you will move along second path. So second path के लिए क्या होगा? Yes, this is along the second path. वर्क डन टू बी ए, दैट मीन्स अब इनिशियल पोजीशन क्या होगी, बी, क्योंकि अब आप बैक आ रहे हैं वापस सेकंड पार्ट के लॉन्ग. तो बी ए माइनस ई डॉट डी एल. ये माइनस क्यों होता है, क्योंकि एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ही लेते हैं. वाई माइनस क्यू ही, क्योंकि हम, आपने अगर डायरेक्ट फर्स्ट लेक्चर देखा हो तो मैंने बताया था कि हम माइनस क्यू ले रहे हैं क्योंकि हम एक्सटर्नल जो फोर्स कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑपोजिट करते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ और होती है और हम जो फोर्स करते हैं वो किसी और दूसरी डायरेक्शन पे करते हैं. सो दैट इज एक्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर. सो एफ एक्सटर्नल जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के एक्जैक्टली ऑपोजिट. सो दैट्स व्हाई वेट माइनस कम है. ओके, so 1 and 2 expression, just add these two values. You will see A to B minus E dot dl. ये फर्स्ट पाथ के along था प्लस ये सेकंड पाथ के along. बट अगर आप लिमिट्स चेंज करते हैं, इसको भी A to B करना चाहें तो ये माइनस एक और आ जाएगा जब लिमिट्स एक्सचेंज करते हैं, राइट? एज यू नो, जब भी हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स एक्सचेंज करते हैं तो माइनस साइन आता है, राइट? So minus minus will become positive. Now you will see this will become positive. And limits are also same. This will become a 0 because the both quantities are same, and this is the plus and this is the minus, and limits are also same. So that means अगर आप electrostatic force कोई work done कर रही है along a closed path, then work done is 0. That means क्योंकि close उसी पाथ से स्टार्ट किया दूसरे पाथ से वापस, तो वो दोनों पास का फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ मैटर क्या कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, दैट विल बी द सेम. सो दैट इज द वर्क डन इज 0. हर केस में वर्क डन 0 नहीं होता, प्लीज रिमेंबर इट. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो या इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क डन करती है वही 0 होता है. दैट मीन्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कंजर्वेटिव बोल सकते हैं क्योंकि उसका वर्क डन 0 होता है ओवर अ क्लोज्ड पाथ. प्लीज रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव. मीन्स आपको पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी पाथ फॉलो करें, यू हैव टू जस्ट सी द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वर्क डन विल बी सेम, राइट? ओके, सो WAB प्लस WBA इक्वल टू 0. एज यू नो, वर्क डन हम इसको ये लिख सकते हैं A to B E dot dl प्लस A to B E dot dl, राइट? सो दिस इज अ लाइन इंटीग्रल. सो टोटल अगर इन दोनों का सम देखिए, पहले आप A से B गए फिर B से वापस, तो क्लोज्ड पाथ हो गए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लोज्ड पाथ का साइन लगा दिया. और लेफ्ट हैंड साइड टू 0 हम प्रूव कर चुके हैं. दैट मीन्स लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड for a closed path is 0, right? Please remember it. Line integral for electric field for closed path is 0. That means we can say that electrostatic field is a conservative field and force is also conservative. That means it doesn't depend on the path that we have to follow. It just depends on the initial and final position. Okay. So next is relation between electric field intensity and electric potential. Please remember this expression. This is very very important for the derivation point of view also, and for numerical point of view, and for the MCQ point of view, please. Okay, so I just have derived this expression. Okay, let's see how to prove it. We take
अ सोर्स चार्ज प्लस क्यू, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई ई वेक्टर, राइट। एंड दिस इज द क्यू नॉट, दैट इज अ टेस्ट चार्ज। मुझे इस टेस्ट चार्ज को ए से बी पॉइंट पे मूव करना है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मैंने लिया डी एल। इस सोर्स चार्ज और ए पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है आर। ए और बी इस सोर्स चार्ज के डिफरेंस है आर माइनस डी आर, राइट। तो जैसे जैसे आप ए टू बी आ रहे हैं आर डिस्टेंस डिक्रीज होता जा रहा है। एट ए पॉइंट मैंने लेट कर लिया पोटेंशियल मेरा है V, एट बी पॉइंट V प्लस डी वी। एज यू सी कि मैंने अपनी तरफ से कैसे लेट कर लिया कि ये ज्यादा ही होगा dv। लेट्स सी, क्योंकि V क्या होता है के क्यू बाई आर। जैसे जैसे आप R को कम, यहाँ जैसे जैसे आ रहा है R डिक्रीज हो रहा है, अगर R डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल तो इंक्रीज होगा ना, क्योंकि पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है पॉइंट चार्ज के केस में। सो दैट वाई आई विल टेक, यहाँ पे अगर पोटेंशियल V है तो यहाँ पे V प्लस dv ही होगा, बिकॉज जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं टेस्ट चार्ज को लेके A टू B में, राइट, तो आपका डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल विल इंक्रीज। नाउ वी विल फाइंड आउट द एक्सप्रेशन डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी। बी पॉइंट पे कितना था V प्लस dv, ए पे माइनस V, दिस विल कैंसिल ईच अदर, दैट मीन्स dv का एक्सप्रेशन क्या हो गया, वर्क डन अपॉन चार्ज, राइट। एज यू सी फोर्स क्या होता है QE और ये Q नॉट प्लीज टेस्ट चार्ज होता है, सोर्स चार्ज नहीं। आई विल रिपीट दिस थिंग्स अगेन एंड अगेन सो दैट यू विल रिमेंबर इट। ओके, दिस -5 क्योंकि हम वर्क डन कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, इसलिए माइनस आया यहाँ पे। सो हमें पता है वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स की वैल्यू पुट करिए, दैट इज माइनस क्यू नॉट इंटू ई वैक्टर। सो माइनस क्यू नॉट ई वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा ई डॉट डी एल में, लेट्स सी फ्रॉम द फिगर इफ यू आर नॉट क्लियर। ई की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, डी एल किस साइड पे जा रही है, इन दिस डायरेक्शन, राइट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई एंड दिस डी एल विल गो लाइक दिस, right, so both are opposite to each other, so angle will become 180, right. Now you will see, yes, minus q naught e dl cos 180, cos 180 कितना होता है -1, so minus minus plus you will get q naught e dot dl, right. Just put down the value of wq in this expression, you will get the value of dv. So just put down the value. One more thing, as you see dl है जो वो dr के किस डायरेक्शन में जा रहा है, मैंने dr को माइनस dr लिखा है, क्यों, see from figure, then you will more clear. Okay, so this dl is the distance to left, dr is distance also to left, but you see जैसे जैसे आप a to b जा रहे हैं, dl को लेके जा रहे हैं, that means dl डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, you will see रेडियस डिक्रीज हो रहा है। तो लेफ्ट साइड पे जैसे जैसे आप मूव करेंगे तो आपका dl दैट मीन्स डिस्टेंस डिक्रीज होता जाएगा, इसलिए मैंने dl को माइनस dr लिखा है, क्योंकि डिक्रीज माइनस या डिपिक्ट कि आपका जो टोटल डिस्टेंस वेरिएशन हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, राइट। सो इसलिए मैंने माइनस dr लिखा है, क्योंकि जैसे जैसे आप dl की तरफ जाएंगे आपका डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज नेगेटिव साइन को डिपिक्ट कर रहा है। Okay, so I will replace dl by minus dr. Just put down the value of w, that is minus q e dr. मैंने dv की हमने ये एक्सप्रेशन किया था dw by q नॉट, that is पोटेंशियल होता है, तो मैंने वर्क डन की जगह जस्ट आई पुट डाउन द वैल्यू ऑफ दिस इज माइनस ए डी आर, ये q नॉट मैं इधर ले आई जो हमने वर्क डन से भी निकाला। सो दिस विल बिकम द फर्स्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। नाउ यू विल सी दिस w by q नॉट को मैं क्या लिख सकती हूँ, पोटेंशियल, that means dw. just put down the value, इस वैल्यू दिस w by q नॉट की वैल्यू को मैंने इन फर्स्ट इक्वेशन में हमें पुट करना है, तो मैंने क्या किया, इसको dv पुट कर दिया यहाँ पे, तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर एंड यू विल लेफ्ट विद E इक्वल टू माइनस dv by dr. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, जब भी कोई क्वांटिटी वेरिएशन करती है डिस्टेंस के along, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे dr इज द डिस्टेंस, तो कौन वेरी कर रहा है, पोटेंशियल, दैट मीन्स कौन वेरी कर रहा है, पोटेंशियल along with डिस्टेंस, सो दैट्स व्हाई आई कॉल इट ग्रेडियंट। क्योंकि पोटेंशियल क्यों बोला, क्योंकि पोटेंशियल वेरी कर रहा है, सो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो दिस एक्सप्रेशन हैज बीन प्रूव्ड। ओके, नाउ वी विल सी द न्यूमेरिकल्स, some of the numericals easy one we will see in this lecture and we will move to harder one in the next lecture, numericals, and start our next topic in lecture. Now see, electric field at a point B due to a point charge Q kept at a point A is 24 Newton per coulomb. That means आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी गई है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी दे दिया गया है 12 जूल पर कूलम। फाइंड क्या करना है आपको, डिस्टेंस और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q, एक पॉइंट चार्ज दे दिया है
एक पॉइंट पे बी पे केप्ट एट ए पॉइंट ए। अगर आप एज्यूम कर लें यस राइट, अगर यहाँ पे प्लस क्यू है आपके सोर्स चार्ज, यहाँ पे हमने कोई भी पॉइंट ले लिया, दैट विल ऑल्सो आई थिंक यस बी पॉइंट। आपको इस बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और जो सोर्स चार्ज है ये जो क्यू पड़ा हुआ है वो ए पॉइंट पे पड़ा हुआ, आपको इसकी वजह से दिस वन चार्ज की वजह से इस बी पॉइंट पे निकालनी है कितना चार्ज होगा और डिस्टेंस, राइट। सो लेट्स सी, ओके यस, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी कितनी 24 न्यूटन पर कूलम। जस्ट पुट डाउन द वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ के की वैल्यू पता है, क्यू एज इट इज, आर स्क्वायर नहीं पता, पुट डाउन एज इट इज। 24 पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, take it as first expression. Now just come to the potential expression, that is kq by r. As you see the difference, kq by r here and here r square. Please remember the formula of electric field and potential, don't forget. 9 into 10⁹ q divide by r. Just divide first and second equation, you will get the distance formula. R, when all the things are cancelled with each other, r will left 1 by r, so you will get distance is equal to 0.5 meter. That means जो point थे A और B दोनों के distance बीच में है 0.5 meter. Now you have to find the value of charge. Put down the value of r in any expression, either in electric field, either in potential. You will get the same expression for the charge. I will put the value of this r in the expression for the potential. V is equal to kq by r. I will just put the value of v, that is 12, k 9 to 10⁹, q as it is, potential r हमने find out कर लिया 0.5. Solve it, you will get the expression for the q, right? Okay, so this will be the answer of, yeah, this is the value of charge. Okay, next second expression is, sorry, it's second numerical, that is A metal wire is bent into a circle of radius 10 सेंटीमीटर। एक मेटल की वायर है, उसको मैंने सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दिया जो कि 10 सेंटीमीटर की रेडियस की थी। नाउ यू विल सी इट इज गिवन एज अ चार्ज ऑफ 200 माइक्रोकूलम। माइक्रो मीन्स 10⁻⁶, सो जस्ट डिकोड इट द वैल्यू। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर। पोटेंशियल इज बेसिकली के क्यू बाई आर। जस्ट पुट डाउन द वैल्यू ऑफ क्यू एंड आर, you will get the value of potential, right? So V is equal to kq by r. K की वैल्यू 9 into 10⁻⁹, q की वैल्यू 2 into 10⁻⁴, r की वैल्यू 0.1. You will get the potential expression. Now the third numerical is the electric field in a region is given by electric field आपको दे रखी है but in the form of variable x. Write the expression for the potential region assuming the potential at infinity to be 0. हमने ऐसे पहले ही फर्स्ट लेक्चर में किया था, मैंने आपको बताया था कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है, ऐसे हम ज्यूम करते हैं, राइट? क्योंकि वहां पे इफेक्ट ही नहीं हो पाता तो पोटेंशियल 0 होता है, इतनी बड़ी दूर चार्ज का पोटेंशियल इफेक्ट नहीं हम देख पाते। नाउ यू विल सी इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन क्या है, a डिवाइड बाई एक्स क्यूब आई कैप। नाउ पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, ई डी एक्स, राइट? पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं ना ई डॉट डी आर, तो माइनस इन्फिनिटी टू एक्स ई डॉट डी आर। बेसिकली होता क्या था, सी वर्क डन होता था, राइट? वर्क डन क्या होता था, नीचे क्यू नॉट होता था, तो वर्क डन डिवाइड बाई क्यू नॉट वो वी ही बन जाएगा, इसलिए एक्सप्रेशन आया है। ओके, नाउ यू विल सी डब्ल्यू, हम क्या लिखते थे, वर्क डन डिवाइड बाई क्यू नॉट that is equal to v, right? So वर्क डन का फॉर्मूला होता था QE, तो मैंने वो Q नीचे लिख दिया तो वो पोटेंशियली बन गया बेसिकली, राइट? सो दैट मीन्स v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू एक्स ई डॉट डी एक्स। आपने e की वैल्यू पुट की, dx वेक्टर है तो मैं इसको मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या करोगे, क्योंकि x है तो x के लॉन्ग आई कैप होता है, राइट? यूनिट वेक्टर जो होता है, तो मैं इसको वेक्टर को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, सो मैग्नीट्यूड इज dx एंड डायरेक्शन इज आई कैप, आई डॉट आई कैप 1। जस्ट सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, माइनस से इन्फिनिटी टू x, इस x की पावर माइनस क्यूब हो गई dx। सॉल्व द इंटीग्रेशन, -3 + 1 -3 + 1, पुट डाउन द लिमिट्स, you will get the value a by 2 1 by x square. So this is the expression for the potential जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, राइट? ओके, आप इसको एक और फॉर्म में भी कर सकते थे, दैट इज E = -dv/dx, जो हमने एक्सप्रेशन किया है। तो आप सीधा अगर डिफरेंशिएट करना चाहते थे, बट
तब भी वहां पे आपको इंटीग्रेशन तो करनी पड़ती है, क्योंकि E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स होते हैं, वहां से आपको इजिली पता चल जाता। अगर आप वर्क डन से डिकोड करना चाहते हो आप वैसे भी कर सकते हैं। ओके, यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, नेक्स्ट इज, प्लीज skip this part. Yes, forget this part. Okay, just come to third question. Yes, the third question will be, a cube of side root 3 meter has a charge 1 microcoulomb at each of its vertices. Find the potential and electric field at the center of cube. Please try this numerical yourself. I will start the lecture from this numerical itself. Then if you don't find this, that it's too difficult, or you want to able to do this, then we will do this in the next lecture, right? Okay, but please try it. Okay, understand the lecture carefully. If you find any difficulty till now, if you find any type of query from previous lecture also, please let me know, right? Or you can contact me, but please cover the syllabus side by side. Yes, if you like the video, share it as much you can, right? Subscribe the channel and hit the bell icon so that you will get notification for upcoming lecture, and please like the video. Okay, thank you so much. Stay safe. Bye bye.